Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Junaid and I am a CIT instructor at GCTW Little Road, Lahore in CIT department. And I'm serving here from 20 years. And nowadays we are doing training with the collaboration of Rehan AI Teachers Institute and the TEFTA. Thanks to TEPTA who giving us this opportunity to enhance our abilities, to enhance our different qualities, teaching skills, so that we absorb all the techniques and different using the different tools regarding it, and after that all the knowledge will be delivered to our students. So different tasks are given to us for enhancing the skills, from which is the TEDx talk. TEDx talks on TEDx talks we have to give the review on in English as well as in Urdu, and different speakers are discussed on different topics. So one of the TEDx talks which is going to be reviewing by me is the future of learning. The future of learning is by the Sugeta Mitra, which is the very talented person who gave us the idea about the future of learning. So, the future of learning by Sugeta Mitra is an inspiring TEDx talk. It's a very TED talk that challenges traditional methods of education. Mitra explains how children can learn independently and when they have access to technology, the internet, and the freedom to explore. His famous hole in the wall experiment showed that children could discover and teach themselves computer skills without formal instructions. So it's a very informative TEDx talk, which explain about the future of learning. The main message is that curiosity, collaboration, and self-directed learning can play an important role in the education. So, through the self learning, through the self directed learning, education is very easy for the children. I found the talk very interesting because it encourages teachers to become facilitators rather than simply giving students information. So, however, I believe guidance from teachers is still important because students have different needs and learning styles. So, according to my point of view, is that it is an inspiring and very thought-provoking talk that encourages us to rethink education and prepare students for a technology-driven future, and should prepare them to learn by themselves, and learning should be individual with the help of different gadgets and different techniques. So it's in English, and now I'm going to deliver the review about this TED टॉक इज़ इन उर्दू. सो उर्दू में रिव्यू देने के लिए मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि सुगाता मित्रा ने जो द फ्यूचर ऑफ लर्निंग में बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से तालीम के बारे में बयान किया है, जिसमें वो तालीम के टेड टॉक मुतासर कन रवायती तरीक़ों को नए अंदाज में दिखाने के लिए डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की तरगीब के बारे में उसने बताया। वो बताते हैं कि अगर बच्चों को टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और ख़ुद सीखने की आज़ादी दी जाए, तो वो अपनी जस्तजू और बाहमी तावन के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी, हॉल इन द वॉल, सीख सकते हैं। इनका मशहूर तजर्बा भी इसी तसव्वुर को पेश करता है कि बच्चे किस तरह से आज़ादी के साथ इंटरनेट की मदद से चीज़ों को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इस गुफ्तगू का बुनियादी पैगाम ये है कि तजस्सुस, तहलीकी सलाहियत, तामुन और ख़ुद सीखने की तालीम में ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। मुझे जो इस टेड टॉक से जो अहम मालूमाती और हौसला अफ़ज़ाई बातें जो नज़र आई हैं, वो यही है कि बच्चे सेल्फ लर्निंग सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और क्योंकि कि हमें सोचने पे मजबूर करती है कि मुस्तक़बिल की तालीम जो है वो सिर्फ़ किताबों तक महदूद नहीं रहेगी, इम्तहानात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि बच्चे अपनी सेल्फ
لرننگ کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال بھی کریں گے۔ مجموعی طور پہ یہ ایک بہترین اور سوچ بدل دینے والی گفتگو ہے جو تعلیم کے مستقبل کے بارے میں ایک نیا اور دلچسپ نظریہ پیش کر رہی ہے۔ تو سگیتا مترا نے بہترین انداز میں دا فیوچر آف لرننگ کے بارے میں بتایا ہے، جس پہ عمل کرتے ہوئے نہ تو صرف ٹیچرز بلکہ اسٹوڈنٹس بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ Thank you so much for giving me this opportunity to express my thoughts regarding the TED Talk, The Future of Learning by the Sugata Mitra, in English as well as in Urdu. Thank you so much for listening. Thank you. Allah Hafiz.